and welcome to the special broadcast. 5.25 crore voters will decide the fate of 1,862 candidates who are contesting for 199 seats today. Voters in Rajasthan, remember, have not given any government a second term since 1993. So the big question is, can the Congress break the jinx, or will it be Prime Minister Narendra Modi that will sail the BJP? Remember, 7 MPs, including Rajyavardhan Rathod, Diya Kumari, Kirori Lal Meena, have all been fielded by the BJP for these assembly elections. The polling has begun. Let's first listen in to the incumbent Chief Minister, Ashok Gehlot, who is contesting from Sardarpura in Jodhpur. सर, ये फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं था सामने। मतलब ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी ज़्यादा लगा, बीजेपी का चेहरा नहीं था। इस बात का आपको लगता है कि बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हो जो कोई जमाना था, 1 मीटिंग या 2 मीटिंग करते थे राज्यों में, गांव-गांव में मैसेज चला जाता था कि आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में, घर-घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है। कल तक आए वो 1 मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा काम ले रहे थे, वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप पे अटैक कर रहे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की, राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो राजस्थान में है, स्पेशली महिला अत्याचार, फिर खाली महिला अत्याचार पे नहीं पर दलित भी है और क्रिमिनल एक्टिविटी पूरे उसमें है। ये डेली का मामला है, महीने में नहीं, डेली का मामला है। तो एक तो ये बहुत लोग परेशान हैं। दूसरा, बेरोज़गारी वाला जो वायदा उनने किया था, अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज कोई रीट की परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। सम 19 बार तो आपके पेपर लीक हुए हैं। सो लोग, बच्चे स्पेशली, उससे बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अंडर करंट चल रहा है, और वहीं पे वसुंधरा जी ने कहा कि जो अंडर करंट दिख रहा है वो सिर्फ 3 दिसंबर तक उनको दिखेगा। अब छोड़िए किसने क्या कहा, आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें, और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार, तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बाकी सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस उस बार आ सकती है। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। And let me go straight to Vedant, who's joining me from Sardarpura, where Chief Minister Ashok Gehlot will cast his vote, and Ravish Taylor, who is from Tonk, where Deputy Chief Minister, in fact former Deputy Chief Minister of Rajasthan and senior Congress leader Sachin Pilot will cast his vote. Before I bring in Avinash Kalla here in the studio, let me get a sense of ground zero. Polling began at 7 a.m. and it will be continuing till 6. Vedant, where is the Chief Minister? Have early morning prayers been offered already? Well, Maria, I'm currently here in Jodhpur. The Chief Minister is expected to cast his vote at around 9:30. I come to you from the polling booth where Union Minister Gajendra Singh Shekhawat will be casting his vote. In fact, you rightly pointed out early morning prayers have been offered. We will, of course, get to the politics of it. Of course, the caste factor is a huge one. Which side will the Gujjar vote swing? What about the Jats? But first, let's get in a sense from early voters. The early morning voters here in Jodhpur. Sir, अपना नाम बताइए। राजेश व्यास। राजेश जी, ये बताइए, आज राजस्थान किन मुद्दों पर वोट देगा? आप आज सुबह आए हैं यहाँ वोट करने, क्या सोच कर आए हैं? विकास के मुद्दे पर वोट देगा
और देश और राज्य दोनों में एक साथ विकास हो, श्रेष्ठ विकास हो, हमारी सीमाओं की रक्षा हो और विकास ऐसा हो कि नौजवान को नौकरी मिले और महिलाओं का सम्मान हो। इस आधार पर हमने वोट दिया है। तो आपने बात करी कि राष्ट्र और आपके प्रदेश में, राज्य में, दोनों में एक समान विकास हो, तो आप आज जब वोट देने आए तो आप क्या कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं, नाम पर वोट दे रहे हैं, काम पर वोट दे रहे हैं? जिस तरह देश का विकास हो रहा है उसी तर्ज पर राज्य का विकास हो। अच्छा। और डबल पावर जब मिलेगा राज्य को तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ विकास होगा, आनंददायक विकास होगा, बहुआयामी विकास होगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, महिलाओं की बात करें, देखिए महिला सुरक्षा की बात हो या महिला शिक्षा की बात हो, पूरे इस कैंपेन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट था। राजस्थान की महिला का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज? उनकी रक्षा हो और बच्चियों के साथ भी अच्छा हो और सनातन धर्म की रक्षा करे, उसी पे हमने मतदान किया है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस पूरे चुनाव में फ्रीबीज का जो मामला हुआ, महिलाओं के लिए चाहे वो फ्री सिलेंडर हो, फ्री लैपटॉप की बात हो, फ्री स्मार्टफोन की बात हो, क्या इसके लिए आपके कोई मायने हैं? क्या मायने? हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारे मेहनत की कमाई का सब कुछ मिलना चाहिए, सबको नौकरियां मिलनी चाहिए और जिसको जो जिसमें गुण है उसकी कद्र होनी चाहिए, सीमा की रक्षा होनी चाहिए और हमें फ्री में न मोबाइल चाहिए न गैस सिलेंडर चाहिए। अच्छा, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पे। आप अपना वोट कास्ट कराई है? दिखा दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। ओके, सो अर्ली मॉर्निंग वोटर्स हियर इन राजस्थान। महिलाओं की बात बहुत इस कैंपेन में इम्पोर्टेंट रही है। महिलाओं का क्या मुद्दा है? आप क्या महिला सोच कर आज वोट कर रही है? एक तो है कि जैसे कि बच्चों के साथ में जो चीजें गलत हो रही है स्कूल के अंदर, वो उसके ऊपर छानबीन हो, उसके ऊपर मुद्दा होवे। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एक लीक हो रहा है, कल भी अखबार की आयन देखिए, गुजरात के अंदर हुआ, नाम राजस्थान का हुआ, एक लीक हुआ है। और महिलाओं के लिए और सशक्त बढ़ावे कि महिलाओं की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। So of course, Mara, remember, as far as Rajasthan is concerned, women voters often outnumber men voters. If you remember the last elections as well, it was a similar sort of a situation. Let's also speak to some young voters. Sir, आज बताइए, आज राजस्थान के युवकों का क्या मुद्दा है? युवक आज क्या सोचकर वोट डाल रहा है राजस्थान में? फर्स्ट प्रेफरेंस तो एम्प्लॉयमेंट है। हाँ। और दूसरी विकास हो, इस बेसिस पे जी। छोटी मोटी रणनीतियाँ हैं इनकी, बीजेपी वालों की अच्छी है। अब लेकिन विकास कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप जॉब एस्पिरेंट के उससे बात करिए, आप यहाँ पे चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हो, जॉब एस्पिरेंट्स हो, वो क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? कि भविष्य में हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिले और आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले, जो कांग्रेस के टाइम पे थोड़ी कम मिली थी। अच्छा, चलिए आप बताइए सर, कई सारी बातें हुई हैं। पेंशन की बात एक बहुत बड़ी रही इस पूरे कैंपेन में। सीनियर सिटीजन्स का जहां तक सवाल है, क्या मुद्दे हैं सर आपके लिए राजस्थान के? Okay, so some people hesitant, of course, as well, Mara, to speak to us. Let's also speak to some other voters. Okay, so a lot of voters hesitant to speak as well. But of course, the sense that we are getting is that development, of course, is a key issue. Employment, freebies. How is that going to translate on the ground? Some voters tell us that is something which is important, and freebies have resonated on the ground. But by and large, there seems to be a sense that, as far as youngsters are concerned, the biggest issue is employment. As far as women are concerned, women's safety actually for a lot of women voters is very important when they come to cast their votes. Yes, today. and those are the visuals that are coming in from Khajuwala, from where Arjun Ram Meghwal is contesting. Union Minister, he's among the 7 MPs that have been fielded by the BJP, sent from New Delhi to their respective state, in fact, to the state of Rajasthan to contest. So that heavyweight presence that we keep talking about, be it in Madhya Pradesh and now in Rajasthan, is being witnessed. Arjun Ram Meghwal there standing in the queue. The significance of this constituency, quickly, Avinash, before I bring in the reporter. Constituency, and that is Rajavardhan Rathod. That's Rajavardhan, yes. Everybody is queuing up. So we were talking about Bikaner, Maria. An interesting factor that happened was that it's not Arjun Ram Meghwal. It is the candidate from BJP is Anshuman Singh, and he is the grandson of Mr. Bhati. He is a rebel, Devi Singh Bhati. So that is one big thing. BJP tried all ends
to pacify Mr. Bhati, and last moment patch up, he came in and there was a rift between him and Arjun Ram Meghwal, which is now settled. So BJP looks confident in that seat. Otherwise, the rivalry between Arjun Ram Meghwal and Devi Singh Bhati is legendary, but now both are in fray and supporting each other for the seat. Okay. Let me bring in Ravish Taylor now, who's joining me from Tonk. That is Sachin Pilot's constituency. There is another rivalry and a legendary one again that is there on the Congress side. The Congress House as divided as we have seen in the past, but there have been efforts that have been made of putting out those imageries, if you remember, that came out from Ashok Gehlot's Twitter handle, where it was seen as, Sachin Pilot, Ashok Gehlot and other senior party functionaries of the Congress having a conversation. Has that really translated into something substantive? Or was it just great optics which the Congress ensured came out? Ravish Taylor के पास अब हम जाएंगे. रवि जी, कहाँ है सचिन पायलट और बहुत सारे नेता तो अभी लाइन में खड़े हो गए हैं, वो खुद कहाँ हैं? जी मारिया, सचिन पायलट अपना वोट कास्ट करने के बाद जयपुर से टोंक के लिए निकले हैं, ये हमारे पास जानकारी है. वहीं महत्वपूर्ण जानकारी है कि सचिन पायलट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत सिंह मेहता, उन्होंने टोंक में हमला बोला है कि जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो हमारी जनता का क्या होगा. आप जो मेरे पीछे जो नज़ारे देख रहे हैं कि सचिन पायलट और अजीत सिंह मेहता के चुनाव लड़ने वाली जो है सीट है, ये हॉट सीट है, खुद दोनों नेता कहते हैं. और लोगों की जो है कतार लगना शुरू हो चुकी है. कलरफुल ड्रेस पे जो है महिलाएं यहाँ पहुंच रही है लगातार, जो है क्योंकि 1 घंटा हो चुका है. उस सूरत में जो है मतदान का अब जो है प्रतिशत बढ़ने की संभावना है. पहले घंटे में कितना मतदान हुआ देखने वाली बात ही होगी. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट है जहां से आज तक कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी लगातार दूसरा चुनाव नहीं जीता है. जब इस बारे में सचिन पायलट से बात की जाती है तो सचिन पायलट बोलते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी भी टॉप के इतिहास में नहीं आया जिसने 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की हो. अभी सुबह सुबह देखिए महिलाएं निकली हुई हैं और कतार में खड़ी भी हैं. उन लोगों से जरा बात करें और समझने की कोशिश करें कि किन मुद्दों पर वो वोट दे रही हैं. आप पहला वोट डाल रहे हैं? नहीं, तीसरी बार. जब महिलाओं की क्या समस्याएं, क्या मुद्दे होने चाहिए सरकार आगे शर्मा रही हैं महिलाओं को जो है. आप कतार में आई हैं सुबह, क्या संदेश देंगे, किस तरह जो है सरकार को महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? पता नहीं मेरे को. आप पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ. कैसा लग रहा है पहली बार वोट? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. बहुत अच्छा फील हो रहा है जी. तो आप क्या अपील करेंगे कि जो है युवाओं को आगे आना चाहिए वोट परसेंटेज और लोकतंत्र के पर्व में भाग? बिल्कुल, युवाओं को आगे आना चाहिए और हमें स्पेशली बीजेपी को वोट दीजिए, मैं चाहूंगी. बताइए सरकारों को जो है युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए सबसे मोस्टली जो उनके एजुकेशन फील्ड में उनकी हेल्प होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट. आप एक चीज देख सकते हैं कि किस तरह जोश बढ़ रहा है. एक माताजी जो है बुजुर्ग हैं वो बैठी हुई हैं. आप कब से बैठी हुई हैं? वोट करने आई? यस प्लीज गो अहेड. वोट दे पाई जो बच्ची दे बगैर बैठी हूँ. लाइन में लगे हुए हैं लेकिन आप वोट करके जाएंगे? नहीं कर लिया वोट तो इस तरह के जो है नज़ारे जो है टोंक का जो है 182 नंबर का बूथ है. बड़ा खूबसूरत नज़ारा है कि किस तरह जो है महिलाएं कतार में हैं और कतार में लगकर जो है चाहती हैं कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और इस तरह से एक संदेश दे रही हैं कि हम सबको जो है अपने मत का प्रयोग करना चाहिए. 2.51 crore voters out of the total 5.25 crore voters in Rajasthan, which is less than 50%, but the message is loud and clear that when it is about ensuring that they matter, women are out there up and about early morning in Rajasthan to cast their votes. So that great voter sensibility or mobilization which has happened is visible also in Rajasthan. Ravish Taylor, मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी, लेकिन those are the visuals coming in of Gajendra Shekhawat, Union Jal Shakti Minister, but someone who's seen as a prominent face of the BJP in the state of Rajasthan. A quick word on Gajendra Shekhawat here, Avinash.
Maria, a lot riding on Mr. Shekhawat, because Jodhpur is the region in Marwar areas, which is the swing district, if I may say. There are 5 districts in the region, Marwar. So you have Jaisalmer and Bardmer, which are Congress bastions. Jodhpur is supposed to be a swing district. And then you have Pali and Siroi and Jalore. Gajendra Singh, interestingly defeated. Before you go to Gajendra Singh, now a quick word on Rajyavardhan now. Yes, it was a tough seat to begin with for Rajyavardhan Singh, but somehow things are looking good for him because Rajpal Singh Shekhawat, who was the rebel, has taken his nomination back, so that is a big relief for him. And interestingly, the Congress minister Lalchand Kataria, who was supposed to be fighting against him, has not contested. So Congress is trying a first-time NSUI president Abhishek Chaudhary from this seat. So that is something that brings some relief to Rajyavardhan Singh Rathod. Now let's see how much polling goes in. And Jotwada is considered to be a safe BJP bastion. So it should not look like a difficult contest at the moment. Okay. But there is one rebel, Ashu Singh Surpura, and these he's rebels, a Rajput. I mean, are quite in a number. Yes. In fact, I was counting the number of rebels in various constituencies. They will have trouble for both the BJP and the Congress. There are 22 seats where rebels are really strong and which would bother the BJP, and the number is roughly around 16 to 18 for the Congress, where serious rebels are standing. So we always have a third front calculation kind of a thing, but let's see how many seats will the rebels impact and which way will they swing, because in the last election also there were 18 rebels from the Congress, 13 of them won and they all supported Mr. Gehlot. So rebels are going to play an important role on the 3rd of December. Yeah, so in a very close contest, rebel factor, as we keep talking about, matter in election after election. And in a state such as Rajasthan, we have seen increasingly that the rebels who could be, Vasundhara Raje loyalists, because of the 7 MPs that have been fielded by the BJP, a number of them are on those seats which were those tickets, in fact, which were earlier given to Vasundhara Raje loyalists. A word now on Mr. Meghwal. Avinash. Well, Mr. Meghwal was supposed to be contesting. There were a lot of rumors that he might be featuring in from Bikaner. He has been a fort runner and he's the chairman of the manifesto committee, but he's not contesting. And let's see how much support he extends to Mr. Bhati's grandson. So that would depend on Mr. Meghwal's region, and Bikaner is looking like a BJP bastion this time. So all eyes and focus on him. Maria, interestingly, whatever names that you are taking, all ministers, they are all running very strongly and very far out of their regions to make sure that they get their maximum supporters in, because the game is open. This time there is no chief ministerial candidate. So everybody is fancying their chance. The maximum number of MLAs that they can get through from their own Kshatrap would determine their fate after December 3. Before I bring in others, let's listen in to Arjun Ram Meghwal. सर माइक थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सभी। महिलाएं देखो मतदान का प्रयोग करने के लिए आ गई, और ये जो मताधिकार का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने, वो मुझे हर मतदान दिवस में बाबा साहब याद आता है। बड़ा बहस के बाद उन्होंने कहा सबको आप मताधिकार का प्रयोग दो। क्यों अपन इंग्लैंड और यूएस का उदाहरण देते हैं कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा यूके में, 110 साल बाद यूके में मताधिकार मिला, और यूएस में भी लेट मिला। हम जब अब आजाद हो गए और हमारे जस्ट बाद बहुत से देश एशिया और अफ्रीका के आजाद होने वाले हैं, तो भारत को कुछ नवाचार करना चाहिए, भारत को कोई दिशा दिखानी चाहिए। तो जो बहस का रुख उन्होंने मोड़ा संविधान सभा में, और फिर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हुए कि अडल्ट फ्रेंचाइज को हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सबको मताधिकार का प्रयोग हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने दिया। मैं इस अवसर पर संविधान सभा के सभी सदस्यों को, विशेष करके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज जब मैं मेरे बूथ पे जब देखता हूं कि अभी
7 बजे या महिलाएं वोट देने के लिए आ गई, इसका मतलब मताधिकार हमारा हक है। अच्छा सर, हम उसका प्रयोग करेंगे सर, और हमारे मत से ही सरकार चुनी जाती है। ये भाव महिलाओं में भी आया है। प्रतिशत बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है। आप खुद कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से कतारें लगी हुई है, इसका फायदा करंट है उनका। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है, उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। हाँ, वो सही है, उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे, अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को, राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी कई जगह ऐसी है कि वोटिंग परसेंटेज गिराओ, ये वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अलग अलग जगह पे हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, जो नागरिक कानून व्यवस्था को मानते हैं उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी आप सोच सकते हैं। परसेंटेज गिराना ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है और हम चाहते हैं कि हर वोटर जाए और जिसको वोट देना है, आपके मन में जो पार्टी है दीजिए। तो आप फर्क यहीं देख लीजिए। हम चाहते हैं कि हर मतदाता वोट करे, वो चाहते हैं कि आप सब घर से बाहर ना निकले। सर, सचिन पायलट कह रहे हैं बजरंग बली भाजपा की मदद नहीं करने वाले। बजरंग बली, अगर सचिन पायलट जी शरण में आएंगे तो बजरंग बली सभी को आशीर्वाद देते हैं। Let's bring in Harsha Kumari Singh, Manisha Priyam and also Arun Sharma of the Congress. But Harsha, beginning with you, in the last few days before the campaigning actually came to an end, we did see some visuals of great bonhomie between the central leadership of the BJP and Vasundhara Raje. Well, we are here actually, Maria, at Jhalawar, which is Vasundhara Raje's polling booth, and she's going to come here and vote very soon. So people are already lining up to meet her. Lots of media crews here as well. But yes, I think the BJP definitely not just towards the end, but I think midway into this election, especially after they announced those 7 MP seats who were going to fight MLAs, I think after that the BJP realized that Vasundhara Raje is a mass leader. She has a hold in Rajasthan and you can't fight this election without her. So they definitely took her on board. She's done as many as 50 sabhas across the state. I mean, she's been crisscrossing the state. So she's done as many as 50 sabhas across the length and breadth of Rajasthan.
She may not be the chief ministerial candidate, but she definitely has her grip on the party and the people. And that is a political reality that the BJP has accepted. It's also a reality that perhaps Vasundhara Raje has accepted because she has, campaigned wholeheartedly for the party. Now, how many people will be her MLAs in the second list and the third list? She did have her way. But in the last list, that was the last 19 names, she couldn't get a ticket for, say, someone like Ashok Parnami. So how many loyalists will actually, be hers? How many may not be hers? That kind of, and people also, they're shifting loyalties in politics. So that kind of arithmetic we'll do later. But yes, you're absolutely right that, somewhere the fact that the BJP realized they have to take Vasundhara Raje on board. And when she did have her way in the second and the third list, she also actually campaigned very extensively for the party. Shah, if you could get me some voices of women who have all lined up early morning because, be it Vedant or another reporter of ours, Ravish, all of them have been getting us visuals and we can see early morning, particularly that enthusiasm which are among the 2.51 crore voters, women voters of Rajasthan. Absolutely. So here are women voters at Vasundhara Raje's booth, and now remember this is a pink booth. ये जो booth है ये pink booth है और आप pink पहन के आए हैं. Yes, इसीलिए. और पिंक ही रहेगा, कमल का फूल भी पिंक है तो खिलेगा बहुत अच्छे से तो आप पूरे राजस्थान में. आप लोग उसी बूथ पे वोट डालते हैं जहाँ वसुंधरा जी आती है? जी हमेशा. पहले मैडम उधर थी तो मैं उधर थी. अच्छा. महारानी साहब के साथ. अच्छा, आप लोग बताइए क्या सोच के वोट डालते हैं? विकास. आपने डाल दिया अपना वोट? अभी नहीं, अब डालेंगे जी. एक ही मुद्दा है, विकास. अच्छा. वसुंधरा राजे जिंदाबाद. अच्छा, बहुत बढ़िया है. एंड देन वी हैव सम टू वेरी वेरी प्रिटी लेडीज हियर ऑल्सो जो एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में आई हैं. बहुत सुंदर लग रही है आप आज. थैंक यू सो मच. आपने अपना वोट डाल दिया? नहीं, अभी नहीं है, अब जाऊंगी. अच्छा, तो क्या सोच के वोट देंगे आप लोग सब? मैं विकास और महिला सशक्तिकरण और ये पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर एंड में जाके जब रिजल्ट आता है उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये मेन है. So interesting to know that that paper leak has become an issue, and remember the BJP has said that they'll set up a special investigating team to get to the bottom of it if they come to power. Definitely that's part of the political narrative, as is women's security and of course development. And those visuals of women coming out to cast their vote, certainly, and Harsha, you're also bright and happy. If I may ask, where is your voting booth, Harsha? Well, this time the Election Commission has made arrangements for people like us who are always out on the field to do a postal ballot. So that's a good step. This is the first time it's happened actually that journalists have also been allowed to vote beforehand. My booth, of course, is in Jaipur. All right, Harsha, we'll keep coming back to you. Thank you so much. And we are slipping into a short break. After that, we'll go to our panelist, Charu Pragya of the BJP, joining us. We have Arun Sharma from the Congress, Manisha Priyam. Good morning to you. Avinash here in the studio. A quick break and then we go to the panelists and try and understand what does it actually mean for Rajasthan and for politics going ahead in 2024. पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे. सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम की ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला इसमें बहुत देर हो गई. देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है. पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं. 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई. हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता. हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे. इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की
संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं अंडर करंट है 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं। लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है, और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा, और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के, यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं, और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करेगी। सचिन जी, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? मंत्रियों के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, या अशोक गहलोत के खिलाफ? ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बात अगर होती भी है तो लोग लार्जर जो पर्सपेक्टिव है उसमें लोग समझते हैं कि यही पार्टी, ये विचारधारा बेहतर है। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ पर राजस्थान में 2 ही प्रमुख दल हैं। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा, क्योंकि 10 साल से केंद्र में है, उनकी भी कार्यशैली को लोग देख रहे हैं। आज जो कमर तोड़ महंगाई हो गई है, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो ब्लेम करेंगे ना केंद्र सरकार को कि 2 करोड़ का आपने रोजगार देने का वादा किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर्स जनता आकलन कर रही है, और मूल्यांकन करने के बाद हमारे पक्ष में मतदान आज होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दोनों तरफ से रिबेल बहुत सारे मैदान में, नहीं, हम कोई 2, 4, 5 जगह लोग खड़े हैं, लेकिन अंत में हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी लेकर आएंगे। थैंक यू। Former Deputy Chief Minister of Rajasthan, for whom this is an important battle, because in the last 5 years of Ashok Gehlot's government, we had seen back and forth and an open fight that played out between the two sides. It was a split wide open in the Rajasthan Congress. Let me bring in my guests and go straight to Arun Sharma. Arun Sharma, all efforts have been made by the Congress party to present a picture that this is not a divided house. The question is, will the voters be in agreement, or will the voters be taking in, your theory of that the Congress is not a divided house? Morning, Maria, and morning, Avinash, fellow panelists. Rajasthan have already woke up to this important morning, as you are showing this in your report, and it's a very crucial election, not only for Rajasthan, it will have implications on national elections also. That's right. You see, Maria, for the first time, Congress party in these state elections were able to set the narrative for these elections. And BJP, people can see now trying to respond to those narratives. For example, only 6 months back, Prime Minister was calling these Jan Kalyan programs as reveries, free reveries, freebies, and now they are responding. They are talking about the subsidized. Just hold on to your thoughts. You have another candidate of yours, Gaurav Ballabh, who's contesting from Udaipur. Speaking, let's listen. हमारे साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद है,
हमने हमारे दिन की शुरुआत भगवान जगदीश जगन्नाथ के दर्शन करके, जगदीश चौक जाकर दर्शन करके हमारे दिन की शुरुआत की। ईश्वर भी हमारे साथ है और उदयपुर के 2,44,000 प्लस वोटर्स भी हमारे साथ हैं। हमारे लिए एक ही नारा है, उदयपुर फर्स्ट। हर चीज में, भले युवाओं के रोजगार का सृजन हो, टूरिज्म इंडस्ट्री के फुटफॉल को डबल करना हो, माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देकर नए रोजगार का सृजन करना हो, टाइम पास की जगह अंडरपास बनाना हो। 20 साल टाइम पास खूब हो गया, टाइम पास वालों का टाइम पास हो चुका है, अब अंडरपास का समय आ चुका है। घर घर स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। झीलों की नगरी वाला हमारा शहर, दुनिया का सबसे सुंदर हमारा शहर, आपनो उदयपुर आपनो गौरव वाला शहर में घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पाए जो लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे यही प्राथमिकता है। Manisha Priyam, when you look at the early morning visuals and the push that is there from both the sides, it's very clear, you know, they seek blessings and then they step out to cast their vote. I don't remember Gaurav Vallabh in this, you know, appearance ever. He was seen, you know, he's a professor at XLRI in Jharkhand, and you know, what does it do to what does politics do to fresh politicians is a clear evidence there. Maria, thank you for this morning program. I think it's been very informative with Avinash Kallaji. I've been listening to every word of what he said, but also the very important interviews that you took with the three tall BJP leaders, Gajendra Singh Shekhawat, Shri Meghwal ji and Rajavardhan Singh Rathod. But coming to Gaurav Vallabh first, it surprises me because the last time I remember him is fighting against Saryu Rai from Jamshedpur. And following the elections, remember, academics like us don't leave elections just for outcomes. Manisha Priyam, just hold on to your thoughts. We'll be going full frame to these visuals that are coming in. Former Chief Minister of Rajasthan and the face of the BJP, clearly someone who has been dominating the politics of the state of Rajasthan like no other, Vasundhara Raje, contesting there. Vasundhara Raje, a quick word on her, Charu Pragya, and then I bring in others. Charu, if you can hear me. Maria, good morning. Good morning. And let me begin by appealing to everyone in the state of Rajasthan to please go out and vote. Your vote is very important. This wonderful day comes once every 5 years. Don't miss the opportunity to choose your government and to make sure that the misgovernance of the last 5 years is not repeated in the state of Rajasthan. So Rajasthan has seen some terrible days in the last 5 years. In fact, I have woken up too many mornings than I care to count with some terrible news coming from the state of Rajasthan, and that needs to change, and that will change with your votes, people. And I can also see Vasundhara ji casting her vote. She's a tall leader, she's an important leader, she holds a lot of influence. And at the same time, in these elections and all the coverage that you're doing, Maria, it is nice to see what the leaders have to say, but it's been fun for me to watch the coverage of people who are voting this morning. You spoke to some old people, some young people. This one girl was casting her vote for the first time, and the excitement was evident in her eyes, and she just said to the camera so happily, do go out and vote for BJP. And I think that is what BJP is about. You know, we are a party which brings hope to the people, the young of the nation, and most of the nation is young. Look towards Prime Minister Modi as something which is going to be the best way forward for not just the state but for the country. Beautiful Lehariya sari, I would say, Manisha Priyam. You know, expect her to wear the finest of clothes, and you have Vasundhara Raje looking bright and dominating that imagery again in a bright sari. It's not just the bright sari. I remember her in her very pastel tangails in the Lok Sabha with Honorable Shri Jaswant Singh ji, a woman carved out to be a leader of her own. Definitely the lineage of a Rajwada, but under Shri Bhairav Singh Shekhawat ji, she learnt very much the art of stitching together what is called a specifically Rajasthani style of politics.
a woman leader who was able to tour on her own. And I remember very much the last victory in 2013 that came just before the national victory of the BJP, her Jan Suraj Abhiyan that she took throughout the state. So here's a leader who definitely has the lineage, who definitely has the stamp of a Rajwada, but has also been a darling of the ordinary folkdom in Rajasthan. Credit to her for having transcended the Maharaja tag, so to say, and become a people's Rani. So much so that even in her dark days in her politics within the BJP, when she's lost out in being able to put forward a feisty fight, she's still someone that cannot be ignored. And I would say that your 3 interviews this morning that came up, Rajyavardhan Singh Rathod, Shri Meghwal and Gajendra Singh Shekhawat, those interviews were very, very revealing for a political analyst. There couldn't have been a better moment than listening to those 3 interviews. And Shri Avinash Kalla, what I gathered from those 3 interviews and now we are seeing the Mahila voters. The BJP is fighting a national election in Rajasthan. Remember, Rajyavardhan Singh Rathod, Arjun Ram Meghwal with his references to Baba Saheb Ambedkar, Rajyavardhan Singh Rathod referring to Desh, etc., appealing to Rajasthan voters from a Jhotwada, where just about a month ago, people were telling me he might not be able to win his seat. There's a lot of infighting there. Now that seat gets clear, and Rajyavardhan Singh Rathod now on a solid footing to appeal to all of Rajasthan and to appeal to Desh, as it were. Remember his army background. And then you have Gajendra Singh Shekhawat. These will be very important chieftains of the BJP going into 2024. The Rani there, the BJP in a mood, win or lose, take a collective leadership to the people of Rajasthan and pick out some from Rajasthan who can be national level campaigners. Okay. That's how I see it. Yes, those are the visuals of Gajendra Shekhawat and his entire family. A word on Mr. Shekhawat, who has almost parked himself in Rajasthan because he certainly, fancies a chance at a different role there. He's the front runner of the pack of the prospective chief ministers. If there is a new face, he has been pushed by the party into Rajasthan state politics since 2018. The time when Ashok Parnami was moved out. Since then, Gajendra Singh has been in picture. And interesting fact, Maria, in Jodhpur, when the Lok Sabha elections were held last, Gajendra Singh won from the booth where Mr. Ashok Gehlot cast his vote. So that was the kind of thing. And before the tickets were distributed, there was a buzz that he might contest because he had got that famous victory. He won on all the assembly seats, but he has refrained out and he has campaigned long and wide. He has campaigned extensively in Marwar and also in Shekhawati, the Sikar region from where he actually comes in. So Gajendra Singh has put in a lot of work. His campaign. Okay, just hold on to your thoughts. In fact, Vasundhara Raje, I believe, is speaking. Let's listen in. Okay. रिवाज बदलेगा राजस्थान के अंदर और इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट अंडर करंट है और वो अंडर करंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वसुंधरा जी, one reaction in English. Once in English for everyone. Just move back, yeah, guys. Stop. पीछे हो जाओ यार आप लोग. Just behave yourselves. Stop acting like seriously. Seriously. Okay, ma'am. So today's vote is very special. Of course, it's your 11th election personally for you also. And for the BJP, there's a lot riding, on this. It's been a high voltage election, closely fought. The Congress government has talked about their social welfare schemes. So just your final words on this. I'm concerned. I just would like to request all voters to come out because this is a very important moment. All voters, especially the young ones, the new ones, it's a major request to all of them to come out to vote. I hope the notice of flowers properly today. And I hope that this is also a vote cast for nation. Madam, you have a young member of your family who's come. Vinayak is standing right next to you. So after you, we're going to ask him also something. But what's your, he came all the way to vote. Yes, first time. Enthusiastic voter. I think that all the Navbat Datas, generally, as one speaks to them, there's a lot of enthusiasm because they are first time voters and they are feeling like now they are part of the
big nation-building machinery. So it's a very big thing. Can we ask Vinayak driven all quickly night before? to come here. Can we quickly Mr. also ask Gehlot is saying Vinayak that this something? time there is an undercurrent and the Riwaz would be changed in Rajasthan and I am also agreed that there is an undercurrent. But he will recognize the undercurrent on the 3rd. And I think that undercurrent would make it very clear that the undercurrent is in favor of the Ma'am, personally for you, do you feel very मैडम महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का मैम लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कितना बड़ा है पार्टी जो है आपको पिछले 4 चुनाव के अंदर जो है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट लेके चली है Let's not get into any of these semantics. Very, very clearly, the party will decide what has to be done. मैम हिंदी में बोल दीजिए Can we ask Vinayak? मैडम Can we take Vinayak's mic? Both of you standing together, we just take Vinayak's mic. Vinayak, take Vinayak को आ जाने दो. These are youngsters, so let's not have it. विनायक पहली बार कैसा लग रहा है So there, having cast her vote in Jhalawar, that's a constituency that she has represented multiple times in the past. I'll be going to all the panelists in just a bit, but a quick update that is coming in from Uttar Kashi, where the workers, 41 workers, have been trapped for the last 13 days and counting after a steel obstacle came in the tunnel. The blade of the auger machine got stuck, which is being cut cut inside, and now the work has halted again. So certainly it seems to be not so good news early this morning coming in for those workers who are trapped inside. Efforts have been on to ensure that they are rescued at the earliest, but so the entire tunnel rescue operation halted again. Let me go straight to Neeta for a quick update. Neeta. So the steel obstacle which came in the tunnel, the blade of the auger machine got stuck, which is being cut inside. So the work has halted, although the workers who have been trapped for over 2 weeks now have received food and other essentials for survival. But efforts have been on. International tunneling experts have been called in as well to ensure that all the obstacles which are there on the path are cleared at the earliest and they are evacuated. But certainly the concerns remain. When will that be? Because NDRF or the state disaster relief, which has been working on ground, there are multiple agencies which are at work in Uttar Kashi, have not been able to give any timeline. On that note, a quick break, but before that, a word from Avinash Kalla. Avinash Kalla, we are seeing a very, very confident Maharani here. And also in many ways, one would say, comeback of sorts of Vasundhara Raje. Yes, it's a comeback of sorts and a very strong one at that, Maria. I remember speaking to Vasundhara Raje on the eve of Ashok Gehlot swearing in. And that day, I remember it very clearly. I will fight and I'll fight back. And she has. Look at the confidence with which she's coming in. And ever since her people were given seats in the second list onwards, the mood has been buoyant. And over the last 3 days, she's absolutely in a very strong mood, very combative. And look at her body language. I think it says a lot. And a lot will depend on the seats where she has canvassed. Close to 50 seats where she has gone and canvassed, the highest by any BJP leader in the state. Yeah, so she has been crisscrossing the state of Rajasthan. You cannot ignore her, Charu Pragya. She is a woman of steel, certainly, in Rajasthan, and BJP is synonymous with Vasundhara Raje in Rajasthan. Yes, it is, and you are right, Maria, and I think she is one of the strongest leaders we have in the country. Doesn't matter male or female. The thing about the Bharatiya Janata Party is that once you are a part of this family, there is no leaving. The identity becomes merged
into each other. And I am very certain that she is going to perform brilliantly as usual in these elections as well. At this point of time, though, there has been an understanding that the party is going to be bigger than individual leaders, and once the elections are done and BJP wins them, I'm very confident they will, that is when the party leadership is going to decide what is going to be best going forward for BJP's future in Rajasthan. All right. Thank you so much for your time. Charu, Pragya, Manisha, Priyam, Avinash Kalla here in the studio. We are slipping into a short break. This remains out of focus. Polling is on in 199 seats in Rajasthan. A crucial battle which will also set the tone, tenor and also the narrative going ahead for 2020.